एनोड डिफरेंट है, वही कंसंट्रेटेड में Cl, क्लोरीन गैस डाइल्यूट में ऑक्सीजन. गुड, ठीक है. So let's just quickly finish up with that. I guess this would be the fourth example, है ना? Fourth. So electrolysis of dilute HCl. In fact, electrolysis of dilute HCl give us same product as dilute sulfuric acid. Exactly similar. Because again, dilute solution में hydrogen ion will be common at cathode, but anode पे, it's the hydroxide ions which will be deposited. तो जब हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट होंगे तो दे विल ऑलवेज मेक ऑक्सीजन गैस. उसकी जो इक्वेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, इस केस में कैथोड पे, कैथोड विच इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड पे तो देखिए हाइड्रोजन इज द ओनली प्रोडक्ट व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक. तो इट वुड बी लाइक H positive plus 2 electron if you write it for 2H positive and H2. और एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन इज ग्रेटर. डाइल्यूट सॉल्यूशन में इट्स लाइक OH आयन व्हिच ऑलवेज डिस्चार्ज इन द नेगेटिव आयन. तो एनोड पे OH आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की एक ही मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, दैट्स लाइक it always would balance by 4 hydroxide. 4OH gives 2H2O plus O2 and 4 electron. ठीक हो गया. But in case of concentrated sulfate HCl solution, इसी के साथ उसको हम अलग से नहीं बनाते. Concentrated HCl solution के केस में we don't need to write everything again. The concentration of chloride ion is greater than hydroxide ion. इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, since concentration of chloride ion is greater than OH ions, Cl2 is formed at anode. Chlorine is formed at anode. Yes, I am recording the class, sorry, but don't worry. So in case of concentrated HCl solution, chloride ion concentration is larger than OH, hence chloride ion will discharge at anode. So it would be like 2Cl negative will turn into Cl2 plus 2 electron. So that's the only difference between dilute and concentrated electrolysis, while hydrogen is formed at anode. ठीक हो गया. क्या हुआ? कैथोड क्या होगा? हाँ सॉरी, एनोड पे नहीं, कैथोड पे. ये था आपका होमवर्क. और इसमें कोई क्वेश्चन है, you guys can ask. We need to finish up with one more example, copper sulfate solution, electrolysis of that, right? So just remember that if the solution is concentrated chloride solution, just like NaCl concentrated, maybe chlorine is formed at anode, right? इसमें भी since the concentration of chloride is greater than OH and the difference in hydroxide and OH is less, just 2 ions, तो फिर वो chlorine is discharged at cathode, anode, sorry. तो मेरे ख्याल से हम आगे चल सकते हैं अब. This is not a tricky example. Copper sulfate is really important one, तो इसको हम ऐड करेंगे next. Number 5. Electrolysis of
dilute copper sulfate solution with graphite electrodes. Okay, by the way, in all these experiments, the electrodes were graphite. But with copper sulfate, I've categorically written graphite electrodes is because copper sulfate electrolysis is with copper electrodes also. So we'll study that in metal extractions later. तो ये वाला जो हम कर रहे हैं, this is like for electrolysis of copper sulfate with graphite electrodes specifically. इसकी diagram we will draw and we'll label it properly. So it's like done in a beaker. Where we have graphite electrodes as cathode anode. So your reactions are specifically graphite as electrodes. Copper sulfate की electrolysis is in two different forms. एक graphite electrodes के साथ है और दूसरी copper electrodes के साथ. The products of the two are different. तो जब आपको question में copper sulfate electrolysis is asked, तो you need to first see which electrodes are asked. तो इस chapter में we go with the graphite electrodes. जब हम metal extraction पढ़ेंगे, copper extraction is in syllabus. वहाँ we have copper electrodes. So this experiment repeats there with different electrodes. इसलिए इसको मैंने इधर mention कर दिया. बाकी सारे experiments में otherwise the electrodes are always graphite. Okay, so in copper sulfate solution, first thing you should know that the solution of copper sulfate is blue. Okay, the aqueous solution of copper sulfate is blue. और इसमें we will do the same thing. We'll list down the ions, then decide what goes at cathode, what goes at anode, and everything. So could you people tell me the ions in copper sulfate solution? Copper and sulfate ions and water say hydrogen and hydroxide ions, right? So copper ions will be like Cu2 positive, sulfate SO4 2 minus, water say hydrogen and hydroxide ions. All right, now look at that discharge series cathode wali और मुझे बताएं कि what will be formed out of hydrogen and copper, which ion will discharge at cathode. सीरीज देख के बताओ. सीरीज नहीं है फिर देख के बताओ. All right. So what does this dilute solution means? Dilute means more water, right? More water means concentration of hydrogen ion is greater than copper ion. Now look at the series again and tell me. हाइड्रोजन जाएगा ना, मैंने आपको एक्सेप्शन में बताई थी. And that exception was that if the weaker ion is in greater concentration, then it will discharge if the gap is not more than 2 ions, right? देखो ये जो क्लोरीन आप लोगों ने बनाया था अभी एनोड पे, that is because chloride ion was in greater concentration, right? And that's why chloride discharged and hydroxide did not. And exactly like that, copper sulfate, when it is a dilute solution, since the concentration of hydrogen ion is greater and copper and hydrogen are just next to each other, so dilute solution it will be like
hydrogen ion that will discharge. But if it was a concentrated copper sulfate solution, फिर copper discharges. इसके बाद हम concentrated के भी reaction लिख लेंगे, but dilute copper sulfate में still hydrogen ion will discharge at the cathode. और hydroxide तो वैसे ही ज्यादा है, sulfate से its difference is too large, तो products are same. हाँ वो नहीं होगा, नहीं सल्फेट तो नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड विल डिस्चार्ज टू मेक ऑक्सीजन, राइट. इसके बाद अब आप इसकी इक्वेशंस रिएक्शंस हम लिख लेंगे. कैथोड एनोड, कैथोड पे अगेन हाइड्रोजन आयंस gain 2 electrons and turn to H2 gas. इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, the blue color stays blue. I mean the blue color does not fade, and the reason this solution is blue, that is due to copper ions. So the observation in this case is that the solution remains blue. ओवरऑल इक्वेशन इसकी वही बनेगी, अगर आपने इसको ऐड करना है तो फिर हाइड्रोजन ऐड बैलेंस करके तो फिर वही H2 plus O2 H2, क्योंकि whenever cathode anode get oxygen and hydrogen, its overall equation will be for making a water. As concentration of copper ions remains same. ये ऑब्जर्वेशन में लिखना है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट इज इन सिलेबस, so they expect you to know that the solution of copper sulfate is blue, and it is blue because of copper ions, and because copper ions do not change in the experiment, it remains its concentration remains same, so solution's color remains same. But इसी के साथ we can add electrolysis of concentrated copper sulfate for a general comparison. Dilute copper sulfate में तो यही reactions, but concentrated copper sulfate के केस में अब आप देखें selective discharge में copper will be going to cathode, right? क्योंकि copper is below hydrogen and it's concentrated already, its concentration is large, so if concentration of copper is larger, it will discharge. और उधर तो hydroxide ही जाएगा. एनोड का प्रोडक्ट सेम होगा, कैथोड पे कॉपर जाएगा, ठीक है, फर्क है थोड़ा. तो उसको आप नंबर 6 पे ऐड करना चाहें या इसी में ऐड कर लें. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये कंसंट्रेटेड के केस में थोड़ा फर्क है ना, कैथोड पे हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि as the concentration of copper ion is greater than hydrogen, it will discharge at a cathode. The concentrated copper sulfate के केस में the cathode reaction will be like copper formed at cathode. इसमें फर्क होगी ऑब्जर्वेशन. इसमें एक और चीज भी हम ऐड करेंगे. So let's just first write the equation at cathode reaction. Cathode which is negative would be Cu2 positive. अब बताएं इसका आगे क्या बनाऊं. कैथोड पे what happens, reduction or oxidation? Reduction, gain of electron, right?
So positive ions typically go and gain electron at cathode, which is reduction. So copper ion need 2 electrons. So you add 2 electrons in it. The ions in the solution are aqueous and they turn into solid metal. So this is the reaction at cathode, while again anode पे you'll get the same reaction. ठीक है, उसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा. अगर आपने लिखना है फिर से लिख लें बेशक, लेकिन एनोड पे इट्स द सेम रिएक्शन. अच्छा, अब इस केस में सी द सॉल्यूशन हैड 4 आयंस अगेन. कॉपर आयन है, सल्फेट आयन, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, राइट. अब जरा देखें बोर्ड पे इस चीज को समझें, इट्स इम्पोर्टेंट. The difference in dilute and concentrated copper sulfate solution is that in this case cathode पे we get copper, there we get hydrogen. Anode पे we get same products. The difference is that in this case, since copper ions are used, right, their concentration decreases with time. And the solution of copper sulfate is blue. अभी जो मैंने diagram draw करके label किया था, तो copper sulfate solution is blue because of copper ions, right? The solution of copper sulfate is blue because of copper ions. Now the thing is that when the concentration of copper ion decreases, this blue color fades. ठीक है, तो blue fades or turns colorless. ये इसके observation में आएगा. तो आप इसके बाद इसको लिख लें कि इस केस में concentrated copper sulfate के केस में the blue color fades. और उसकी रीजन भी एग्जामिनर आपसे पूछता है जी क्यों फेड हो रहा है. तो इसके साथ आप नीचे लिख लें ऑब्जर्वेशन में blue color fades as concentration of copper ions decreases. So observation is that blue color fades, and if the reason is asked, तो फिर आप उसको बताओगे the copper ion concentration decreases. So secondly, this copper will deposit at cathode, right? Say if this is cathode and this is anode, तो copper पे graphite, cathode पे copper deposits, ये वाला. The thing is that copper is pure form में copper is a pink solid. So you need to write a pink solid at cathode. ये observation में आता है. Blue color fades and we could see a pink solid. Actually pure copper is pink, but we hardly have 100% pure copper, so it's like light brown pink color mix. But pure form may we say it's pink. So what do we see at anode? Oxygen being formed. So we see bubbles. Taken? Not oxygen at anode. We say bubbles at anode. Dilute copper sulfate के केस में तो both electrodes पे we get bubbles. इस केस में we get a pink solid at cathode. We see blue color fades because copper is being used up plus bubbles at the anode. अच्छा, इसमें एक और important चीज आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसे concentrated NaCl electrolysis is really important. उसमें मैंने काफी सारे point ऐड किए थे, pH पेपर और litmus पेपर वाला, क्लोरीन की वजह से सारा. इसी तरह concentrated copper sulfate के केस में भी they ask you these things, and that is the nature of the solution left. I mean once we pass the current, the nature of solution left, इसको आप कैसे decide करोगे? देखें जरा बोर्ड. देखें, these were the ions which I had initially, right? Concentrated copper sulfate में, these were the ions. तो nature of solution left के लिए what you need to decide or see is कि which ions have been used up. कौन से ions use हुए हैं? तो आप देखो इसमें copper ions used at cathode and hydroxide ions at anode. So what I'm left with is this HSO4. That is rather acidic solution, H2SO4 you could say. ठीक है?
So we would say that the nature of solution left is acidic. It is acidic, और अगर आपसे पूछी जाए कि why is it acidic, तो आप उसको बताओगे due to hydrogen ion, not sulfuric acid. It is acidic because the solution gets more hydrogen ions, as cathode is not getting hydrogen ions, right? Cathode the copper ions are discharged. Since the solution gets more and more hydrogen ions formed in it, after some time, its nature gets acidic. Acha, sometime examiner would ask you this concept in a very indirect way. तो अगर आप लोग खुद try करें, what would be the pH of the solution initially and finally? Initially and finally, we have done acid basis chapter. मतलब before passing current, I had copper sulfate solution. So what would be the pH of the solution before starting the experiment and then after finishing the experiment? पहले मेरे पास क्या था? Water and copper sulfate. What is copper sulfate? Copper sulfate is a salt. देखिए सुने. We have done acids, bases, salts last chapter. ठीक है? Salts are neutral. Salts are not acidic or basic. As per Cambridge syllabus, we say salts are neutral. तो अब अगर if I take water and put copper sulfate salt into it, तो water की pH neutral, salt is neutral, the pH initially will be 7, neutral. So the pH of the solution initially would be 7. You could put this nearly equal to 7 or equal to 7 even. It is neutral. And once the solution is like sort of the process is done, the electrolysis is over, we say it's turning acidic. तो आप उसकी pH फिर acidic range में 1 2 थोड़ा सा strict हो जाएगी because it doesn't make a very strong acid here. It stays dilute. So we could write 2 3 3 4 इस तरह से. लेकिन if someone writes 1 2 2, it's fine. क्योंकि we know it's sulfuric acid sort of being formed at the end. तो इसकी जो pH finally होगी, we would rather preferably write it 3 to 4 acidic. अब ये जो point मैंने इधर ऊपर लिखा है, it is same concept asked in a different way. Initial pH बताओ और final pH. So final pH you would mention only when you know the solution is turning acidic because of extra hydrogen ion being formed in the solution. And then they rather sometimes make it in more indirect cases. After the experiment, blue litmus was dissolved, few drops, so you say it turns red because solution is acidic, right? और अगर वो blue litmus डाल रहा है तो red डाल रहा है तो no change. अब ये experiments हमारे like the ones which you need to know, these 5-6 solution electrolysis, और इससे पहले हमने 3 किए थे molten salt. Total 8-9 experiments हैं. अभी metal extraction में भी फिर copper sulfate will repeat with copper electrodes. ये तो हमने graphite electrodes से किया ना, but there in metal extraction after one chapter we'll reach that. तो फिर हमारा दोबारा ये electrolysis आएगा. हाँ? नहीं, next हम पढ़ेंगे types of reactions, which is really important. Metal extraction इतना कोई concept by strong chapter नहीं है. It's much of memorization. Metal extraction. लेकिन जो types of reaction है ना, like rate of reaction, energetics, exothermic, endothermic, हाँ, और reversible reactions. हाँ, ये सारा मैं एक ही चैप्टर में पढ़ा देता हूँ. Reversible reaction, type of reaction, ये सारा core concept. It's really important area. तो we spend decent amount of time on it. उसके बाद metal extraction, फिर organic, फिर environmental chemistry. Organic second last and पे environmental chemistry हम discuss करते हैं. Nitrogen, sulfur, pollution, air and water, ये जो air and environment. Chemistry में सारे topic हैं. जैसे energetics में some of the calculation or concepts are not in GCO level. और IGCSE में ज़्यादा नहीं है. केमिस्ट्री का सिलेबस इज प्रीटी मच सेम. बायोलॉजी और फिजिक्स में शायद थोड़ा फर्क.
अच्छा भैया, अब इसमें if you have a question you can ask. नहीं, चलो अब एक एक्सपेरिमेंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को खुद से ट्राई करने के लिए. Have you done this zinc sulfate electrolysis? बस आप लोग बनाओ. Dilute zinc sulfate solution. Try and make it stop. I mean, zinc sulfate is not in syllabus, but you will find it in past paper. Observation उसमें आपको जो समझ आया आप लिख लो, but mainly the reactions at cathode anode. Zinc sulfate electrolysis. इसको आप कोई अलग से experiment number नहीं बनाए. As a practice, you can add electrolysis of dilute zinc sulfate solution. डबल दिखती है कि क्लियर दिखती है? टेस्ट में नंबर थोड़े आए ना तो भी सही क्लियर चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं एक दो दिन के लिए. Dilute zinc sulfate electrolysis with graphite electrodes again. So write down the ions, then write cathode reaction, anode reaction. ऑब्जर्वेशन तो इसमें बड़ी सिंपल है, वही होगी, सेम ऑब्जर्वेशन ही होगी ना. ओवरऑल की भी जरूरत नहीं, बस आपने आयंस लिखने हैं और रिएक्शंस लिखने. सॉल्यूशन तो मेरे ख्याल से वही रहेगा आई गेस. हाँ. So what ions are present in it? Zinc or SO4. So what's the charge on zinc? Same plus. Zinc Zn plus 2 and sulfate will be SO4 minus 2. Water से we get hydrogen and OH ions. अब वेट से निकाल लेते हैं माइनस पे तो प्लस. देखो सल्फेट 2 माइनस है तो ये 2 पॉजिटिव है. ऑक्सीडेशन नंबर हमने किए हैं इसीलिए. And then cathode reaction, and for cathode reaction what will be formed? Zinc plus root plus. सीरीज देख के बताओ. नोट्स में लिखी हुई है सीरीज. अब कल हर बंदा सीरीज याद करके आए. मिल गया कासिम है. अब देखो dilute solution means that hydrogen ion concentration is greater than zinc
and they're fairly at large distance too, and otherwise it's a dilute solution, right? Hydrogen ion ज़्यादा भी है और नीचे भी है, so it's hydrogen ion which will discharge at cathode, and that gains electron and make H2. You could actually write the electrons on the arrow like that. ठीक है, MCQs में sometime you get to pick the correct equation. So if it's written like this, it's perfectly fine equation. But if it's written like the negative sign, तो ये गलत है. What's wrong with this? Sir, -2 हो गया. I mean, I'm removing electron from the positive ions, which is not possible. So positive ion has to gain electron. So without negative sign, electron can be put on the arrow even. तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा एनोड पे, तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन, that will be 4OH negative, H2O and O2 plus 4 electron. इसको बैलेंस करना, देखो भैया मैंने ये इक्वेशन इसको याद करना है, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस करो, फॉर 1 मोल ऑक्सीजन इट टेक्स 4 हाइड्रोक्साइड. I mean without 4 there you can't even balance this equation. तो वो बैलेंस करने के लिए आपने 4 लिखा है, और ये इक्वेशन 4-5 दफा तो मैंने लिख दी, इसको याद कर लेना आपने, ठीक है. Technically what happens is कि 4 of the hydroxide ions, 4 of them, it's like each having 1 negative charge on oxygen. So each hydroxide loses 1 electron. So when this electron is lost, so they all give 1 electron, and total we get 4 electron. And then once they lose electrons, these hydrogen and oxygen start combining together. These to become water, H2O, H2O, 2H2O, और ये बन के ऑक्सीजन में. So it's like 2H2O, O2, and these 4 electrons which they sort of shed off. तो अब without balancing with 4 you won't be able to balance the entire reaction. तो इतनी डिटेल्स में वो तो 1 ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि otherwise oxygen is -2. So 1 oxygen would eventually result in the formation of 1 mole of oxygen along with water will give us 4 electrons. क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, and 4 electron will come from 4 hydroxide ions. तो ये बस इतनी डिटेल में कौन पूछता है, आपको जस्ट इसको याद करना है, बस प्रैक्टिस कर लें उसकी. बट डोंट राइट दिस इक्वेशन, ये भी मैं बता दूं. इधर एनोड पे कुछ बच्चों ने एक शॉर्टकट इक्वेशन सीखी होती है, आई डोंट नो हाउ, के जी, because they know कि oxygen is the product at anode, right, and 4 electron, तो वो ये इक्वेशन याद कर लेते हैं, 2O minus 2 O2 plus 4 electron. ये इक्वेशन, this is correct but not for a solution. इसके लिए ठीक नहीं है. It is for molten oxide. Like if I had a molten oxide Na2O, the molten oxide will have sodium ion and oxide ion. इसमें से ये reaction होगा. See, oxide ion is not present in this solution. इधर hydroxide. तो आपने ये नहीं है कि ये मुश्किल लगती है तो मैं वो लिख के आता. ये मेटल ऑक्साइड के लिए, दिस इज फॉर द सॉल्यूशन. दोनों इक्वेशंस फर्क जगह पे लिखेंगे, ठीक है. चलिए बस मैं रोकता हूं, इसको खत्म करता हूं. कल आप लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें, क्योंकि अभी तो नोट्स में से देख के आप उसको अप्लाई कर रहे हैं ना. इस केस में ये और ये यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा ना, न्यूट्रल ही रहेगा ना. देखो हाइड्रोजन आयन न्यूट्रल रहेगा. सर वो ऑक्साइड जो है, सर वो फिर याद करेंगे.